ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। We welcome all of you to today's Bhagavad Gita class. We are studying chapter 4, verse 18 onwards. Bhagavan is speaking about karma. In the previous two verses, he had said how we should understand what is karma, what is vikarma, and what is akarma. Because all of us, we perform some karma to get result. So it is essential that whatever karma we are doing, we will attain the desired result or no, or we will get something contrary only. So any intelligent person should try to understand this.
समझिए, So unfortunately or due to ignorance, in whichever way you take it, समझता नहीं है। in this world nobody tries to understand this. गिने चुने लोग होंगे, Some rare people, शास्त्र का ठीक से अध्ययन करते हैं, they study परंपरा Shastra से properly in parampara. इस विषय का ज्ञान हो, They नहीं तो बाकी लोग have this knowledge. तो सभी करते हैं क्योंकि मनुष्य Otherwise, योनि ही कर्म योनि है। everyone is performing karma because human form of life is जैसे karma पिछले yoni, अध्याय meant to में perform भगवान जी ने karma. कहा था, नहीं कश्चित In third chapter, Bhagavan himself had said, कोई भी बगैर कर्म किए एक क्षण के लिए भी नहीं रह nobody can live even for a moment लेकिन without कर्म का performing अर्थ karma. यहाँ पर केवल क्रिया मात्र से ही But नहीं है, their karma does not mean क्रिया और just कर्म में भेद some है। kriya. ये पहले भी हमने There is difference between kriya and karma. कि क्रिया Just any हो action सकती है, and karma. कर्म भी हो सकती है, So kriya or any action, it can be karma, vikarma or और ये akarma. भेद क्यों होता है? And why does this difference क्योंकि exist? हमारा जो भाव होता है, हमारा जो मनोभाव है, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, Whatever mentality we इस have, दृष्टि से by whatever our desires are, करते हैं, with उसकी what दृष्टि से mindset we are performing that action. और एक ही क्रिया जो है वो कर्म भी हो सकती है, अकर्म भी हो सकती है, विकर्म भी हो सकती है। तो इसी दृष्टि से भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कर्मणि अकर्म या पश्य, So Bhagavan is telling here, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्य में one who sees inaction in action and action in ऐसा inaction मनुष्य is ही wise among human beings. सभी कर्मों में Such a person is established in equanimity of mind कर्म and विपश्चिता participative in all कर्म manner of action. बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। तो बात ये थोड़ी अटपटी लगती है कि कर्म So में it may sound कर सकता है, like a paradox. जैसे कि How can you गिलास see जल से भरा हुआ है, akarma in karma? कोई कहेगा It's कि उसको like खाली suppose a देखकर glass is filled with water and you say that one who sees it as empty, तो जो उसको or भरा हुआ suppose there is an empty glass and you say one who sees it as भरा हुआ full. देखता है, भरे हुए को खाली देखता है, वो बुद्धिमान है। So one who ऐसे sees व्यक्ति the को full कहेंगे glass as empty and the empty as full, he is intelligent. Is he intelligent? You will say that he is a fool ऐसे जो or खाली भरे हुए deluded. को खाली देखे, भरे हुए को भरे देखे, Intelligence is seeing the empty glass as empty व्यक्ति जो उसका and विपरीत है। the full glass as full. लेकिन यहाँ This भगवान person should be स्पष्ट called कहते हैं intelligent. कि जो कर्म में अकर्म देखता But है Bhagavan is telling that one who sees akarma in karma and karma in akarma, तो इसलिए ये समझने वाली बात है। he is intelligent person. ऐसा So we have मनुष्य to जो है वो understand युक्त this. है, And then he says that such a person, संयुक्त है, he is जिसके yukta, he उसमें is established in equanimity of mind. तो समचित्त व्यक्ति का कहने का क्या मतलब है कि वास्तव में So जो what is the समचित्त meaning है of वही calling him कर्म कर सकता है। samachitta? Meaning is that one who is samachitta, only he can see like चित्त जो this. है वो समता की स्थिति में नहीं है, वो वास्तव One में whose chitta is कर्म not अकर्म नहीं in देख सकता, state of कर्म अकर्म equanimity, देख he सकता, cannot see karma in akarma and akarma in देख karma. सकता है ये भी नहीं कह सकते। तो इसलिए So that is यहाँ उन्होंने why कहा कि सयुक्त है, here he said sayukta, that he is yukta. पहले भी बताया गया था कि जो And समता for की स्थिति yukta, में होता है earlier also it was said that one who is in the state of equanimity of mind, he is called yukta. और उसने सारे कार्य कर लिए हैं, And ऐसा he मनुष्य जो है has उसने done अपने सब कृत्य all the कर लिए हैं। activities. तो सब चित्त कर लिए हैं का मतलब उसके लिए कुछ करने के लिए कुछ बचा नहीं है। So he has done everything means there is nothing remaining for him to be done. कार्य करते हैं तो कार्य से हम कुछ Because प्राप्त करना anything चाहते that हैं, we do, उसी के लिए we करते हैं। want to get something तो out सब of कुछ it. कर लिया है का मतलब कि उसने So उसको he has प्राप्त done करना है, everything उसको means whatever he wanted to attain, he has attained. कृतस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, उसको ना करने से कुछ लाभ है, ना करने से कुछ हानि है। So neither there is any लेकिन फिर भी वो benefit कर्म by करता है, doing वो क्यों nor करता any है? loss by not doing. Still he will do karma. Why he will do karma, that is another thing. But he has no need. तो स युक्त कृत्स्न कर्म कृत का यही अर्थ है कि उसने So कृत्स्न sayukta karma krit means कृत करने वाला है, जो means करता
everything, ये उसका अर्थ है। means he does or he has done. This is the meaning. तो अब ये देखना है कि So now we have to see कर्म में अकर्म कैसे देखना, that seeing ये akarma कैसे in होगा। karma, how is that possible? तो इसका अर्थ है कि जो So कर्म this करते means हुए that one उसमें who, निर्लिप्त while रहता है, doing actions, while doing karma, जो क्रियाएं करता है remains उसमें detached. निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त Whatever he does, he remains nirlipta, not attached, कोई भाव नहीं रहता, meaning that he does not invest sense of कोई doership इच्छा in that, भाव नहीं and he रहता। does the action without any desire for fruits or results. और इसको समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए And it is भगवान ने little difficult to understand this. That's why Bhagavan is कुछ speaking लोग so इसको much उल्टा about भी karma. Earlier also in two verses he explained. Later also he will कि keep हमारा speaking अपनी more about लाइफ में कोई this. अनुभव नहीं है Because in our life we do not have any such कर्म को experience करना। of doing anything without हम desire सोचते for हैं result. कि मैं ऐसे We करूँगा cannot वो करूँगा even think about कि this, that why मैं कर्म should I करूँगा do फल any मिलेगा। action without desiring for the result. और यहाँ पे वो कहते हैं कि इसी And प्रकार here कर्म he करो, says that karma should be done like this तुम्हारे only. गले उतरेगी नहीं कि So मैं कोई मूर्ख हूँ this कि मैं कर्म point करूँगा और is उसकी फल की little इच्छा करूँगा। difficult to digest. Am I a fool that लेकिन I इसी do का मतलब something योग है, without desiring और इसी को for करने से result? आपको But this is yoga, शांत होगा। and only by doing और this your जो mind आप will वास्तव में become अपने जीवन में peaceful, प्राप्त करना चाहते हैं and उसकी प्राप्ति whatever होगी। you actually want to achieve in life you will be लेकिन able जब to तक achieve it. हम मोह में हैं, हम भ्रम में हैं, But हम अज्ञान as में हैं, long as we are तब in ये भगवत illusion, मार्ग में ignorance, प्रवेश नहीं till कर then सकते। this point will be जैसे difficult for us to कुछ understand. लोगों की So just like हॉबी some होती है, people, they have a hobby. हॉबी का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा कर्म करता है कि वो उस कर्म Hobby उसको means what? उससे वो कुछ He, प्राप्त नहीं करना he चाहता, does some लेकिन karma, उसको but he doesn't want to attain anything out of it. He does it कुछ because लोगों he की likes हॉबी it. होती है कि वो Some people have the hobby कुछ of लोगों की gardening, हॉबी है कि वो कुछ some like वाद्य यंत्र बजाते हैं, music, कुछ लोगों की हॉबी है कि उनको बस playing पढ़ना अच्छा लगता instruments, है। some like just like studying. तो वो कर्म जो भी करते हैं इस प्रकार So के, whatever the karma वो they do करते like हैं, this, that is also karma उसको only, कर्म को करते हुए वो इसलिए नहीं but करते कि इससे they are हमको not पैसा doing मिलेगा, this with the desire इससे for हमको कुछ earning लाभ wealth होगा, or earning name and लोग fame, प्रशंसा करेंगे, or people will glorify me, देख or देख के कहेंगे कि बहुत or अच्छा कर when रहे हो। people will watch me they इस will say, प्रकार की yeah, you are भावनाएं doing होती हैं, something very और nice. इस अगर इस They don't प्रकार की have भावनाएं this दूसरों type की of हॉबी feeling, है, and if they have this type of feeling then it is not तो hobby, इसलिए then it हॉबी is को हॉबी, like work. That's why hobby is different from work. इसलिए उसका हॉबी शब्द का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है कि वो काम नहीं है, That's why the word hobby is काम used, नहीं it's है। to differentiate from work. और जिसको भी इस प्रकार की हॉबी में करने का कुछ अनुभव है, वो ये तो समझेगा ही कि उसको करने में उसको आनंद आता है, And whoever उसको has some hobby, he knows that when he एक चित्त की एक प्रसन्नता होती है। does the activities related to the hobby, he feels very happy. ऐसे बहुत क्रियाएं लोग करते हैं, लेकिन So people do many things उसको हम like समझते this, नहीं है कि मैं ये but कर रहा हूँ, they don't understand, इससे मेरे को आनंद आता है, they don't लेकिन मैं realize इसका that I am अन्य समय deriving भी कर pleasure सकता हूँ। out of this activity. So can I do it गीता in का the other पूरा time उद्देश्य also? जो है, जो कर्म का The उद्देश्य whole जो है, यही objective है कि मैं of अपने Gita, the स्वभाव को, teaching of Gita is हॉबी क्या that है, जो आपका स्वभाव है उसके अनुसार what is काम hobby? करते हैं, Hobby means you work according to your swabhava. क्योंकि जो आप अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं Because whatever you वो do according to your swabhava, आपको अच्छा लगता है, you like उसमें that. आपका चित्त की समरसता बन जाती है, So इस you प्रकार है attain a जैसे state of बहाव samarasata of chitta बहाते in हुए that. हैं, It's like suppose बहाव you के साथ just बहते हुए चले lie जाते हैं, down in the उसमें river and you move ahead according to the flow of हवा भर the के डाल के river. नदी में Suppose you और उसके ऊपर fill air in a धीरे से tube चलती and जाएगी you और sit आपको on गिरना that ना पड़े। तो जब हम inside स्वभाव in के the अनुसार river, कार्य then you करते will हैं just move तो along ऐसे with ही that, along the with the flow of river. और ये जो भगवान ने So when we बनाए work कर्म according to our उसके swabhava, it is like this only, कि मैंने चतुर्वर्ण जो बनाए गुण और कर्म के that अनुसार I बनाए हैं, have इसी made प्रकार these ये four है। varnas according और to आज guna and संसार karma. में It is like this only. सबसे बड़ी So समस्या today, यही है कि हम the biggest अपने जो problem in the world कार्य is करते हैं, that चाहे whatever वो हमारा बिजनेस work हो, we चाहे do, हमारा whether it is our किसी कार्यालय में हमारी नौकरी हो, वो business तय or करते any हैं कि हम work in the स्वभाव के office, अनुसार नहीं कर
Generally, it is not according to our हमारा जो कर्म swabhava. है वो हमारे गुण के अनुसार नहीं है, Our इसलिए work उसका is सामंजस्य not according to our उसमें guna. नहीं बैठता है, और इसलिए हमारे अंदर एक तनाव पैदा होता है, That's why we फिर have हमको परेशानी anxiety, होनी पड़ती है and then we have कि to हम take उस holiday, तनाव we को have to दूर go करें। somewhere तो to कहते हैं कि हम reduce the अपने tension. गुणानुरूप, But अपने if स्वभावानुरूप काम we करेंगे work तो according to हमें our कोई छुट्टी gunas, दे our देता है तो हम swabhava, छुट्टी नहीं even मानते if हैं। somebody wants to give us holiday, we will not desire for कई लोग holiday. मेरे को कहते हैं कि आप कभी Many कभी times people 8-10 दिन tell की me, छुट्टी लेके कहीं जाया करो। you should also मैं go सोचता हूँ out मेरा तो somewhere by एक ही taking दिन holiday चला for 8 जाऊंगा, or और वहां पे 10 मैं वही days. करूंगा जो आप कर But रहे so हो। I think that even if I go, I will do the same thing what I'm doing here, because what will I do in the अगर मैं holiday एक दिन period? छुट्टी लेकर चला गया तो Suppose फिर I मुझे take उसी दिन holiday and I जाना go है, somewhere, what will I do? I will do the same thing only. तो मैं तो ये अपनी किताब खोल के पढ़ने लगूंगा। I will just open the book and मेरे को start इसी में studying. रस आता है, I derive rasa और in जो लोगों को studying समझ नहीं आती है वो सोचते हैं कि only. मेरे को तनाव हो रहा People है don't इसलिए understand this. They think मैं क्या that करूं, I am इसलिए मेरा in स्वास्थ्य खराब हो रहा है। anxiety due to this studying so much, तो ऐसा नहीं है, वो and उसमें that's why I have health problems. So it is not like that. Wherever I go, I will study only, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है because that is my swabhava. और मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करूंगा, और उसमें मेरे And को I will कोई work according to my swabhava only, तनाव and नहीं that होगा। gives me pleasure. It doesn't give me any tension. That's why I don't take any holiday. रविवार को I तो teach मेरा पहला daily. डायरेक्ट था, आज भी पढ़ रहा हूँ। Today is Sunday, so today also I am teaching. तो इस बात को समझना है हमें So this is what we have to understand. कि जब आदमी इस तरह से काम करता है तो Whenever फिर वो a human being अपनी इच्छा works को like छोड़कर काम this, कर सकता है। he works without desire for result. अरबी का तो मैंने एक उदाहरण दिया ताकि उससे समझ आ जाए, लेकिन हमारा So जीवन ऐसा नहीं होना I gave an चाहिए। example of hobby so that you पहले understand. लोगों का But जीवन actually बहुत our life should be सुखमय like था, this only. And earlier इसलिए कोई lives, तनाव people's कम lives था, in India was like this only. That's why there was no tension anywhere. लोग आराम से अपना काम करते थे और शांत दिखाई People देते थे। used to work happily and they were always peaceful. बहुत पहले की बात है, जब मैं इस्कॉन में था A long तो time back when I was in ISKCON, मेरे को बता रहे थे कि then जब वो one यहाँ devotee आए was दिल्ली telling में, me वो that उस when he arrived in India for the first time, के आसपास somewhere in थे, the 70s, तो कहते कि उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि he लोग said यहाँ that से he क्यों was भागते very हैं। he was surprised that why people are और so quiet जगह जगह वो देखा कि in लोग बैठे India, हुए हैं, and he saw that in so many आराम से places people were just बैठ कर बात sitting कर रहे हैं चाय की peacefully, दुकान पर या कहीं। talking in तो a फिर tea ये जानकर stall उनको or just on the ये roadside. समझ नहीं आया कि ये करते क्या है। So he उसने was सोचा कि surprised that ये I don't understand what do these people ऐसा do. He thought that this is also some kind of work, तरीका मत ऐसे देखने को because he मिलता had है, come from America. You don't काफी see like दौड़ता this in है, America. Every person is running all the time. लाइफ इज वेरी फास्ट। You say that life is very fast there. तो कहता है उसको बहुत बाद में समझ So आई है कि एक तो ये he said इनकी that he लाइफस्टाइल है, understand इनकी after जीवन a lot शैली of इस प्रकार time की है। that this is their lifestyle. तो कहने का मतलब है कि पहले The लोग point is शांत that स्वभाव, earlier people शांत स्वभाव के थे, were ज्यादा always very peaceful like this. They did not have much गुस्सा नहीं desires. होते थे, They were living और जैसे आगे happily. कहेंगे कि वो उनके अंदर एक प्रकार की संतुष्टि थी So जो they आज had देखने को नहीं some मिलती है, type of भारत में भी देखने को नहीं मिलती है। satisfaction which you don't see even in India. तो ये 50 साल पुरानी बात, So this is something I'm telling around 50 years उससे back, भी ज्यादा पुरानी। maybe even more than that. तो ये जो कर्म में अकर्म देखने का मतलब है वो यही है कि So जब व्यक्ति seeing akarma in karma means फल आसक्ति that को छोड़कर when a person और gives up कर्तृत्व के the अभिमान को desire for छोड़कर कार्य result करता है and sense of doership, तो उससे उस कर्म का फिर बंधन नहीं होता उसके लिए। then he does not have bondage to karma. वो कर्म फिर उसके लिए कर्म नहीं रह जाता है, That karma is no longer karma for वो him. उसके लिए हॉबी हो जाती है, It's a hobby. यानी कि वो अकर्म हो जाता है। It हॉबी is का मतलब है akarma. अकर्म, Hobby means akarma. हॉबी का मतलब होता है अकर्म। In Sanskrit, you can say जो hobby is व्यक्ति akarma. कर्म में हॉबी देखता है, So, in a way, Bhagavan is telling देखता है that one और who देख sees करके hobby उसी in तरह से karma. कार्य करता है, So, seeing means he यही है works like that भाव only. से काम करना। He makes his hobby only his work. तो उसको वो कहते हैं कि वो That is बुद्धिमान है।
working without detachment. दूसरों को वो मूर्ख दिखाई लग सकता है, So Bhagavan says this person is intelligent. He may appear a fool in front of others. Now you may ask, where will he eat? How will he live? So this is just an illusion that we have in the mind that such a person will not get food or anything. No, you work according to your swabhava. There also you will get money, but the most important thing is that the happiness that you want from money, you will get it even before getting money. Ultimately, even from money, you want, what do you want? You want happiness only. Every person wants happiness. सुख क्या पैसे से ही मिलेगा क्या? अगर आपको बगैर पैसे So के do सुख you get मिलेगा तो आप रहना happiness पसंद नहीं करेंगे उसमें? only by money? Without और money, उसकी क्या if you are getting happiness, will you not like to get happiness? मिलेगा? And what is the guarantee that money will always give you happiness? बल्कि ऐसा प्राय नहीं होता है। Generally, तो ये लेकिन it is not like भ्रांति this. फैली हुई है हमारे दिमाग But में। this, we have this illusion in the mind सुख जो है वो केवल पैसे से ही मिलेगा, अगर पैसा नहीं that है तो happiness is only possible from money. लेकिन यहाँ वो बता रहे हैं कि बगैर पैसे के भी मिल जाएगा। Without money, how can one be happy? तो पैसे से उससे पैसा भी आएगा। If you work, you will get money also. Why will you not get money? लेकिन आप अगर उसकी इच्छा But करके काम करोगे तो शायद उतना if ना आए you जितना बगैर इच्छा के आ जाए। if you work desiring for वासुदेव money, वाली then you बात may को not get इसी that को amount of बार money. बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये समझ में आती नहीं है। So Bhagavan is explaining this point of attachment repeatedly. Even Arjun does not understand. It's very difficult to understand. Till the fifth chapter, Arjun will keep asking more about this. In the beginning of third chapter, he had asked. In fourth chapter, the Bhagavan himself only started, even without being asked. In fifth, again there will be question. मूल कारण यही है So the main reason is this only, that इस बात को समझते नहीं है और we do not understand this, and it is it just doesn't get digested easily. कर्म को फल के अनुसार फल की इच्छा से करते हैं तो फिर उससे बंधन होता है। When we work desiring for result, then we become bound by karma. में भी कहा था कि As I told in the previous class also, क्रियाकलाप that चलते हैं whatever एक actions we perform, कर्म के ऋणानुबंधन से चलते हैं। सबका they एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ ऋण है। all the karmas are done. फल इच्छा से कार्य करते हैं ना। Whatever we work, it is like we are all interconnected, indebted to each other. So according to the debts, we are born in a particular family, and we have to pay off those debts. Otherwise, we will have to suffer, and then we will be bound to pay off the debts. जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं So the intelligent person, इच्छा नहीं करते हैं, he यानी कि उनका जो does not desire for result, कि मेरे को यहाँ से ये प्राप्त होना चाहिए, meaning मेरा that अधिकार है, whatever मेरा हक है, adhikar they have, हक को त्याग देते हैं they give up that adhikar और उससे उनका rights. They don't claim for result, and when they stop claiming the result, the bondage to karma is cut off. जिनका हमारे ऊपर अधिकार है उनकी वो सेवा करते हैं। And those who have claims on us, those who have some rights on us, we serve them. This is the method how to get rid of those debts, that we give up rights on others, and those who have rights on us, we serve them. तो उससे क्या होगा कि जो मेरा पुराना ऋण है वो तो So then what will happen? Whatever old debts are there, they will be paid off, and we will not create any new debt. मोक्ष की स्थिति में आ जाऊं। Then we will come to the state of moksha. ज्ञान भगवान यहाँ पर हमको बता रहे हैं। This is the science of karma that Bhagavan is teaching us. But what happens is, लेना ही चाहते हैं, we just want to take more and more. आपका हक हो या ना हो, लोग दूसरों का हक भी ले लेते हैं ना। People even claim that which belongs to others forcefully, so they exploit others. तो वो देखने में तो ऐसा लगता है कि लोग बहुत मजा कर रहे हैं। So it appears as if they are enjoying, but they are not enjoying. They are just tying the noose around their neck, because nobody can
escape this cycle of karma just by their wishes. So whether you get the result now or later, you will get it definitely. And that result of karma, it will not give you any intimation in advance that it is coming in your life. It will come without any notice. So the intelligent person is he who understands this. तो जो निर्लिप्त भाव से फलेच्छा को त्याग करके So without attachment, one who works without sense of doership, that is akarma. और दूसरा अकर्मणि च कर्म है कि अकर्म में जो कर्म देखता है, तो ये क्या है? And the other is one who sees karma in akarma. What does that mean? So like suppose some people are not working out of laziness. तो ऐसा नहीं है कि वो कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे. So it is not that they will not be bound to karma if they have not lost the sense of doership and not lost the desire for results. Then even while not working, even while not doing karma, they are doing karma and they are getting bound by it. There is nobody who can live without doing karma. You are breathing continuously, even that is going to create bondage because you are taking this air from somewhere. You are not paying anything for that. You are drinking water, you are breathing, you are alive, you are sitting on the earth. So this is not your private property. So when it is said that you are born with debts, that those debts are there and you are increasing it more and more. You are eating food. So Bhagavan said that one who cooks only for himself, he is eating sin only. So you're eating, you may say that I have earned and I have, this food is from my own hard-earned money. But that is also creating karma. Even if you are sitting silently, not doing anything, you have to suffer the consequences of the karma. So you cannot say you cannot say that is akarma. In the 18th chapter of Gita, Bhagavan says, राजस परिकीर्तित, कि जो आपका नियत कर्म है उसको अगर आप नहीं करते हैं, niyata karma you have, the prescribed karma you have, if you give it up, और दुखमित्येव यत् कर्म, it is tamasic. अगर आप किसी कर्म को इसलिए करते नहीं हैं कि उससे आपको दुख होगा, शरीर को कष्ट होगा, if you are avoiding any karma thinking that it will bring some pain, then it is rajasic. So not doing this karma is equivalent to doing karma. त्याग फलम लभेत, वो कर्म ना करने का सोचो कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा. तो ये मनुष्य योनि विशेष तौर से कर्म योनि इसलिए इसको So this human form of life is known as karma yoni. Here you will have to work and you have to learn the science of doing karma, and if you do karma or not do karma, both, without learning the science of karma, you may think that I am not doing karma. In both ways you will become bound by karma. Those who are doing karma without learning the science, they will anyway get bound, and those who are avoiding work without learning this science will also get bound. So point is that whatever debts you have, you will have to pay for it, and if you do not pay, then you will anyway you will have to suffer. You cannot stop it. कुछ लोग जो हैं वो कर्म इसलिए नहीं करते कि उससे उनकी बड़ी प्रशंसा होगी, आदर मिलेगा, ये तो मुक्त व्यक्ति है. साधु लोगों में ऐसा होता है ना. In sadhus this happens. People think that they are just
people say they are liberated persons, they don't do anything, तो वो भी उनका भी बंधन होगा, they will also be bound मान आदर उसके लिए कुछ कर रहे हो, because they are doing something to get name and fame, prestige, respect. So they become proud ना that I am not doing का अभिमान तो anything. होता ही है, ना करने का भी अभिमान हो जाता Anyway, people have pride for doing so many things, but sometimes you have even more pride for not doing anything. है। करने वाले के अभिमान को तो कोई कह सकता है कि आपने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, जो नहीं कर रहा उसमें क्या कहेंगे। Because if somebody is working and he has pride, you may say that you have not done this properly or whatever. But if somebody is not doing anything, what defect will you point out? लेकिन जब आप कर ही नहीं रहे हैं तो If somebody is doing something, you may say that the other person is doing better than you. But if you are not doing anything, what is better or worse? You can't point out any defect in that. So that is also an illusion. तो इसको समझना चाहिए। So we should understand this. भगवान ने कहा था That's why in Gita, Bhagavan had said भूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, कि जिसमें योगी सोता है उसमें भोगी जागता है, that when the yogi sleeps, their bhogi is awake, and when the bhogi sleeps, the yogi is awake. So there, the point was this only, भोगी जो समझता है कि एक कर्म है उसको योगी that whatever bhogi understands to be karma, the yogi understands to be akarma. है जो उसमें भी कर्म होता है। तो इस बुद्धि से उसको समझना, So understanding this science properly, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान जो है akarma in karma and karma in akarma. One who understands this, Bhagavan says he is intelligent. और इस व्यक्ति को कहते हैं कृष्ण कर्मकृत। And he says that this person is Krishna karma krit. कुछ कर्म So Krishna karma krit has both meanings. You can do karma, में भाग ले सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करे तो he can participate, it doesn't matter to him कर्तृत्व का whether अभिमान ही नहीं है। he does or not does, because he has no sense of doership. कृष्ण कर्मकृत का एक और भी अर्थ हो सकता है, Krishna karma krit can have one more meaning. कृत धातु जो है वो काटने के अर्थ में भी होती है, Krit dhatu is in the sense of cutting also, कि वो सारे कर्मों को काट देता है, that he cuts off all the karma. का मतलब सब कर्मों को काटने वाला बन जाता है, यानी कि He cuts off all karma, meaning कर्म that कोई uh, भाव नहीं पड़ता। karma has no effect on this person. तो अष्टावक्र गीता में इस So in Ashtavakra Gita, according to this, कहता है there is one nice verse. निवृत्तिरुपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फलदायिनी, कि जो मूढ़ व्यक्ति है, जो कर्म के सिद्धांत को समझता नहीं है, That it says that the fool who doesn't understand the science of karma, for him nivritti is also like pravritti. Not doing anything is also doing something. और प्रवृत्तिरपि धीरस्य, लेकिन अगर कोई And one who is a dhira धीर मतलब वही जिसको भगवान ने यहाँ युक्त कहा है, means means what Bhagavan has told here as yukta, or who is intelligent. तो उसका वो कर्म ना, उसकी For him, प्रवृत्ति भी निवृत्ति pravritti is also nivritti. और इसका उदाहरण भगवान ने पहले कहा, And Bhagavan gave the example for this earlier. He had given the example of Janaka. लोक संग्रहार्थम भी कर्म कर्तुम ये अर्हसि संपन्न कर्तुम अर्हसि। तो जनक आदि जो है वो कर्म करते थे, राजा थे, राजा So होकर Janaka, etc., they were kings. They used to work. King has to do so much work. It's not an easy job to maintain a kingdom. So many problems come up. But he did not become bound by karma. He got liberated. He got liberation. Bhagavan also says, पंक्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो विजानाति स कर्म भीर न बंधते। कहते हैं कि मेरे को कर्म फल की स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को so कर्म Bhagavan says that I do not have the desire for result, but I am always engaged in karma. जितना कर्म भगवान करते हैं इतना तो कोई भी नहीं करता है, Nobody can match him. के लिए तो कोई बंधन नहीं है
to the extent of the amount of karma that he does, but he doesn't become bound यह इच्छा नहीं है। because he has absolutely no desire for any result. उसी सिद्धांत को यहाँ पर समझा रहे हैं। And that is what he is trying to explain here. इसका फिर वो एक उदाहरण देते हैं कि जो कर्म में Then now he gives example for this, देखता है और अकर्म that one who sees akarma in karma and karma in akarma, how to understand this, what are its guna and dharma. उसका वर्णन आगे So वाले श्लोक में करते हैं। in the next verse he explains this. काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। वो कहते हैं कि Translation: जो प्रत्येक कार्य को one whose entire undertakings are free from the desire for enjoyment और जिसके and कर्म whose actions ज्ञानाग्नि are द्वारा burnt up भस्म हो by जाते the हैं, fire of knowledge उसे विवेकी is पुरुष called पंडित sagacious by the wise. तो यहाँ पर ये काम संकल्प वर्जिता उन्होंने कहा। So here he says kama sankalpa varjita, meaning one who is free from kama and sankalpa. तो काम शब्द तो हमने बहुत बार सुना है, We have heard this word kama many times. पहले भी आया, Earlier also it was there तीसरे अध्याय में काम in the third chapter. वहाँ पे काफी विस्तार से भगवान ने वर्णन किया। There Bhagavan काम का explained मतलब in होता है lot of कि detail. So मेरे पास kama, कोई वस्तु नहीं one है, meaning is that उसको प्राप्त whatever करने I की don't इच्छा को have, काम बोलते the desire हैं। for अगर मेरे obtaining पास कोई that वस्तु is है, called काम, or whatever मेरे we पास वो have बनी रहे, to maintain that, उसको काम बोलते हैं। that is also called काम. तो ये तो हम समझते हैं संकल्प So क्या we है। understand this. Now what is sankalpa? बहुत बार सुनते हैं कि हमारा मन जो है वो संकल्प Often विकल्प we करता है। hear that our mind it does sankalpa and vikalpa, buddhi does nishchaya. तो ये संकल्प विकल्प को समझना आवश्यक है। So it is important to understand sankalpa vikalpa. Sankalpa means samyak kalpana, किसी चीज को अच्छा समझना, meaning to understand संकल्प something जो है ये कामना का nicely, फल है। to understand something as very nice. So sankalpa is the root of kama, जब हम किसी or you can वस्तु say को it is the देखते mother हैं of kama. When we see any तो देखने object, से by seeing हम फिर उस पर निर्णय करते हैं कि ये अच्छा है या we बुरा है। decide वैसे ही it is good or किसी भी bad. चीज को देखता है Naturally, उसको whenever we see अच्छा anything, लगता our है या mind नापसंद करता है। automatically it तो ये मन का एक likes or गुण है। dislikes it. This is the guna of हर चीज को mind. It's a दो quality भाग of में mind. विभाजित Mind किया गया है divides ये मन में। everything into two. बाहर जो There वस्तु is है वो duality. अच्छा बुरा ऐसा कुछ है नहीं, उस पे कोई Whatever objects चमत्कार are का कोई there in the टैग नहीं है external कि ये world, अच्छा they है ये don't बुरा have है। any tag that this चाहे is उसमें good or bad. जहर भी हो, Whatever it is, even जहर को हम poison, ये नहीं कह सकते कि you जहर can't बुरा है। say that poison is bad only, because poison also has some qualities. तो हर चीज में कुछ अच्छाई है कुछ So बुराई है। everything has किसी भी चीज some को आप ये कह दें good कि ये अच्छी and है bad ये बुरी है, elements. ऐसा तो कुछ So है नहीं। you can't say anything, कोई you सोचता can't भी नहीं directly है, label anything as good or bad, and nobody कोई thinks also विशेष like किसी this. चीज को अच्छी बुरी सोचता है। But the human being, हर he एक व्यक्ति considers ये something सोचता as है good कि ये or अच्छी bad. है बुरी है। Everyone will say this is good or हमारा this is मन bad. और So from where do you हमारा मन get ही this division? पैदा करता है। Our mind only हमारे creates मन this का ये division. हमारे मन का एक वैशिष्ट्य है This is a कि quality of the mind. ये चीजों को दो में तोड़ देता है। It divides ड्युअलिटी objects हमारे मन into से two. आरंभ होती है। Duality. This duality begins from the mind. तो जैसे हम सांस लेते हैं Like we तो breathe, बाहर तो हवा एक ही है, so एक air ही is same लेकिन only. जब सांस लेते हैं तो दो में बदल जाती है ना। So when we वही breathe, the air gets divided बिना into two. एक It उंगली एक one सूर्य नाड़ी एक चक्कर लग enters जाए the तो left nostril, other in the right तो nostril, वही and हवा then they have different quality यहाँ also. से चालू हो जाता है नाक से और अंदर जाके अलग अलग वो प्रभाव दिखाती हैं। And they should वैसे ही give हमारा different मन भी effect है when we go inside. कि हम किसी So our वस्तु mind को is also देखते हैं like अपने this. इंद्रियों के माध्यम से तो सबसे पहले मन पर जाता है। When we accept any object, मन when पर we जाता है consume तो any मन फिर object, दो विभाग कर first देता it है। affects the mind. Mind अच्छा है creates duality. It ये मेरे को divides पसंद है ये मेरे को into good पसंद and नहीं है। bad. This is what I like, this is तो what I जो don't like. पसंद होती है So what I like, उसमें संकल्प होता है कि अच्छी है
इसी को there in that I have sankalpa, meaning this is nice, I like it. This is विकल्प sankalpa. मतलब ये अच्छा And नहीं, vikalpa means तो मन this जो is not good. संकल्प विकल्प करता है वो यही संकल्प So विकल्प the करता है sankalpa and vikalpa that mind does, it is this कि only, ये चीज जो है वो अच्छी है, मेरे that this उपयोगी है, is good सुखदाई है, for me, this is ये going चीज to जो give है me वो मेरे happiness, उपयोग की नहीं है, but this is, and the other one, it is not हानि good. करेगी, वो विकल्प होता है। और उससे फिर इच्छा पैदा होती है, And then that gives rise to desire. अगर ये अच्छी है तो उस समय भी अगर इच्छा ना हो If it is तो good, आपके अंदर एक then संस्कार उसके even प्रति if you रहेगा, don't have the desire, but you have that अगर उसको आप samskara, बार it बार is good. देखते रहोगे And if you तो see उससे it भी again and again, आप में काम पैदा हो जाएगा। then karma will arise, that now I want this. प्रसंगात संजायते काम, गीता में भगवान ने जो कहा कि उस संग से फिर In उसमें Gita, कामना Bhagavan पैदा said होती है, that और वहां से फिर एक from बार कामना Sangha पैदा हो we गई get the kamana, desire. आपको बुखार की तरह पकड़ लेता है, And वायरस की then that तरह, once the desire और arises, then it will फिर आपको catch hold क्रोध of you आएगा, tightly लोभ like a आएगा, virus. मोह आएगा, Then there will be krodh, अनेक lobh, प्रकार की बीमारियां moha, पैदा होंगी, so many different वासना समाप्त anxieties. होगी। They all come from desire only. तो इसका आरंभ जो है वो विषय से होता है, So it begins with the sense object. तो ये है संकल्प। This is sankalpa. और इसका दूसरा, उसका जो विरोधी चीज है जो रहता है, And the other one, which is contrary, that is vikalpa. संकल्प हम उस दूसरे अर्थ Now में प्रयोग करते हैं we use the word कि हम sankalpa करना in चाहते other हैं, way also, that when we want to संकल्प do करते हैं कि something, हम ये करेंगे, we take a sankalpa that we will do पावर this. बोलते हैं, In English, you call it संकल्प को विल पावर। willpower. तो वो वास्तव में तभी है जब किसी विषय के संबंध में आपके विकल्प खत्म हो जाते हैं और संकल्प मात्र रहता है, तो फिर आपका संकल्प दृढ़ हो जाता है कि मेरे को ये प्राप्त करनी है। So your sankalpa becomes strong that now I want it. वो That's why उससे फिर अहंकार आता from है, sankalpa, ahankara arises. कर्तृत्व अभिमान आता है कि मैं इसको, The abhiman for doership, the pride for doership, that I do it. And then you do it. तो इसलिए संकल्प जो है उस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, So sankalpa is used in that sense करने का also, संकल्प लेते हैं, that लेकिन we उससे take the पहले sankalpa for इच्छा doing पैदा होती something, है। but desire is already हमारा there मनुष्य जीवन जो है उसमें तीन because चीजें हैं, our human life, ज्ञान, इच्छा, these three things go प्रयत्न। together: jnana, ichha, and prayatna or kriti. तो संकल्प उससे पहले होता है, So sankalpa is before the jnana, मतलब चीज अच्छी लगती है, meaning you उसका like अनुभव something. होता है आपको, उसको अच्छी लगती है, फिर आपको सम्यक So ज्ञान उसका you प्राप्त होता experience है, that, you like it, and then you get proper knowledge इच्छा of होती that, है। तो इस प्रकार से you desire for it. ये पूरी प्रक्रिया चलती है। In this way, the whole system और अगर continues. ये दोनों संकल्प और काम ना हो And when, और तब आप कर्म if करें, sankalpa and kama both are not there, and then you work, आपके ऐसे then समझिए कि आपके you can understand it कर्म like जो है ना वो जल गया, जैसे your भगवान ने karmas कहा are getting burnt. कर्मण्येवाधिकारते कर्मणि, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। समारंभा माने कार्य, जितने भी आप कार्य Samarambha करते हैं, means the इसको undertakings, अंग्रेजी में whatever प्रोजेक्ट you बोलते हैं। start or projects. तो वो आप आरंभ करते हैं, लेकिन उसके So पीछे you काम begin का them, संकल्प नहीं but है। behind them, what you have is kama वो आप sankalpa only. अपनी जैसे ज्ञान की अग्नि से आपने उनके बीजों So को it दग्ध is किया, like you have burnt the तो वो फिर seeds. अब कर्म जो है वो बीज के समान है, Karma is like लेकिन वो the सब्जी seed, है जिस बीज को आपने but now it भूंज is दिया, fried. भड़भूजे के यहाँ ले जाकर जैसे चना वगैरह भूंज देते हैं ना, तो वो फिर जमेगा नहीं खेत में अगर उसको डालेंगे तो So once the seeds are fried, even if you sow it in the field, it will not grow into any crop. तो ये उपरिचर राजा की कथा है, So there is a story of महाभारत this में, कि एक Uparichar बार एक king राजा यज्ञ कर in रहा था Mahabharat, that the king, once और king यज्ञ was में doing आहुति देनी yajna थी, and he had to तो give उसमें the ahuti in the लिखा yajna, है कि and there it is said अजय न यजेत, के यज्ञ में आहुति जो है वो आज से की जाए। the ahuti तो should be done इसमें with aja. आज शब्द का
क्या अर्थ Now the होता है problem अज? is what is the meaning of aja? Because aja has two क्या अर्थ meanings. होता है One खतरा, meaning is और goat एक अज शब्द का होता है and the बीज। other meaning is seed. तो वहाँ जो देवता लोग थे उन्होंने कहा कि So अज the devatas बकरा, said that here aja means goat, यानी कि बकरे की बलि दीजिए। meaning you have to do goat और sacrifice. ऋषि लोगों ने कहा कि नहीं, But अज the शब्द का अर्थ rishis यहाँ पर they बीज said है। that here aja means seed. तो अब बीज कैसे हो सकता है? Now how can it be seed? अज का मतलब होता है जो पैदा Because ना हो। aja means one who is not born. भगवान ने कहते हैं ना यहाँ गीता में, अजो अपि सन्नव्य आत्मा Like भूतानि, in Gita also Bhagavan says that I am मेरा aja, जन्म नहीं है, जन्म नहीं meaning है। तो बीज I से तो not अंकुर born. निकलता है, उसको अज कैसे कह दिया उन्होंने? उन्होंने अज का So अर्थ, how did the जब बीज rishis tell ऐसे that होते aja हैं means तो seed? उनका So अगर some ढक्कन seeds हटा दो are तो फिर उनसे such अंकुर नहीं that होता है। if you remove the जैसे covering, जौ then है, they will not grow. उसका अगर आप छिलका निकाल दो, या धान है उसका Like ऊपर से jaw कुछ or निकाल दो, dhan, if you तो remove the चावल covering, चावल को आप खा सकते हैं कुछ you पत्ते, can eat लेकिन the आप rice, चावल but को you cannot जमीन में sow it डालेंगे in the ground तो and उगेगा नहीं। cultivate rice. No, that will not happen. तो वो भी तो बीज ही है ना। तो इस तरह का And बीज that is also जिससे seed only. छिलका उतार दिया गया है, So such a उसको अज seed कहते from हैं। which the covering is वो removed, बहुत that is बड़ी called बीज aja, होता है। because that cannot तो इसी grow प्रकार into crop now. कर्म का जो छिलका है वो Similarly, काम और karma, संकल्प है। the covering of karma is काम and तो उसका sankalpa. वो छिलका अगर हम So if उतार you दें, remove that अज covering from the seed of जो karma, the कर्म का काम फल है, and sankalpa, तो फिर उसमें से कुछ then पैदा नहीं होगा। it will not grow into वो anything. पोषण तो करेगा, It will nourish us. जैसे धान में से चावल निकाल लें Like if तो you चावल का आप चावल बना just के खा separate the सकते rice हैं, from the dhan, then you खीर can cook बनाइए, rice, पायस khichdi, बनाइए, kheer, और लड्डू बनाइए, kheer, laddu, इडली idli, बनाइए, dosa, डोसा, whatever. So many things, so many preparations are अनेक प्रकार possible. के व्यंजन आप चावल से तैयार कर You सकते can हैं। make so many तो वो preparations आपका by शरीर का तो rice. पोषण So करेगा, that will nourish your लेकिन body. उनको अगर आप बीज But रूप में if खेत you में डालें तो sow वो it नहीं in होगा। the field, you will not get anything out of इसी it. प्रकार ये जो कर्म है, Similarly, जो काम this संकल्प karma, वर्जित कर्म है, ये उसमें कुछ which is बीज की devoid तरह of kama चीज and है sankalpa, it is जो like आपका that seed from which पोषण तो covering is करेगा, removed, which will it will nourish you, लेकिन वो but आपको बंधन में नहीं डालेगा, it will not it will उससे not कुछ नया lead to bondage. और कर्म पैदा नहीं होगा और आप उसमें बंधे New नहीं karma will रहेंगे। not be created. You will not तो be इसलिए bound by it. ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कहते हैं कि उसको लोग पंडित कहते हैं, तमाहु पंडितम बुधा। So it is said that people call पंडिता such का person अर्थ होता as है कि pandit. पंडा संजाता यस्मिन इति, पंडिता इतच प्रत्यय लगा के। तो पंडा कहते हैं सदासद विवेकनी बुद्धि को। Panda means the uh, ऐसी wisdom बुद्धि or जिसमें सत discrimination और असत का by which विवेक we हो can सके, separate Sat and Asat, क्या ठीक है क्या गलत what है, is right, what is किससे मेरा wrong, बंधन होगा, किससे मेरा बंधन नहीं what will होगा, lead to bondage, किससे what सुख will lead to सुविधा मिलेगी, liberation, किससे मेरे को what will सुविधा bring मिलेगी, happiness, what will bring किससे मैं suffering. बंधन में पड़ूंगा, कष्ट उठाऊंगा। तो इस प्रकार की बुद्धि जिसमें पैदा हो जाती है, So उस one who व्यक्ति को gets this पंडित type कहते हैं। of knowledge, और one who पंडित has such शब्द sense क्यों of दिया गया है? discrimination, क्योंकि मूर्ख Vivek, लोग भी he किसी is को पंडित Pandit. कह देते हैं। And who calls such person a Pandit? Because sometimes even जो fools tell लोग some person जो that he लोग is a कोई Pandit थोड़ा बहुत जानता है, कुछ in the पढ़े village. लिखे If हैं, even if somebody has little थोड़े skills of बुद्धि वाले हैं, communication, then people say he is जाति Pandit. विशेष ही हो गई, Nowadays, Pandit is a ब्राह्मण आदि jati को भी also. पंडित कहते हैं, चाहे उसको कुछ Any भी ना आता Brahman हो। by default is also called Pandit, even if that Brahman does not know anything. तो पंडित शब्द का मतलब होता है जो व्यक्ति विवेकवान है, So विवेकशील Pandit है, means one who has शास्त्र the को sense of जानता है, discrimination, who has knowledge of Shastra, शास्त्र की गहराई को समझता है, one उसको who पंडित understands कहते the हैं। depth of Shastra. और That person is इसको called Pandit. विवेकी जन पंडित कहते हैं, बुधा। And the Buddha, the Viveki Jan, those who are wise, they श्लोक call में such person as Pandit. संस्कृत में कहते हैं कि गृहेषु पंडिता केचित, केचित मूर्खेषु पंडिता, सभायाम पंडिता केचित, केचित पंडित पंडिता। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में पंडित So हैं, this means that some people, there are some people who are Pandit in their बात home. चलती है लोग उनको मानते हैं, बाहर कोई नहीं पूछता उनको। Outside, they may not be और कुछ लोग respected. ऐसे हैं जो मूर्खों में पंडित हैं। And there are some people who are Pandit among the fools.
निरस्त पाद पे देश एरंडोपी द्रुमायते, जहाँ कोई भी पेड़ पैदा नहीं होता है, Wherever, रेगिस्तान, if in some वहाँ अरंड का in the desert, छोटा पौधा हो तो उसको ही पेड़ कहते हैं। if there is a small, there is no other सभाओं में पंडित tree, but if there is an aranda tree, कुछ लोग then ऐसे होते हैं कि people, सभा में पंडित it's a small plant, but people call it a tree. कि And लोगों की सभा है, so like this, उनके fools call द्वारा some person as चर्चा pandit, चलते हैं। or some people are pandit in an ये भी assembly. कला है, They can give a nice कोई lecture. भी उस प्रकार का प्रवचन नहीं कर सकता है कि लोग This उनकी is also चर्चा an कर art. सके। Every person does not have this art of influencing others. So they have this लोगों की skill of शक्ति होती है speaking जो दूसरों को प्रभावित करती with है, a certain style which can तो उस influence समय वो others. पंडित हैं। So they are जब the सभा pandit in assembly. सभा के बाहर में कुछ शास्त्र की चर्चा करो तो वो Outside the assembly, if you discuss with them anything about Shastra, they will not be able to tell आम you. आदमी को किस तरह से प्रभावित करना है, But they know how to वो भी influence the पंडित ordinary कहलाते हैं। person. So they are also called Pandit बोलते हैं। in the Sabha. They are called Sabha Pandit. तीसरा चौथा वाला जो है कैचित पंडित पंडिता, कुछ ऐसे हैं जिनको पंडित लोग पंडित कहते हैं। And there are some people उसकी who बात are कर रहे called हैं Pandit by कि Pandits also. पंडितम So बुद्धि। that is what Bhagavan is talking of here. तो आगे भी गीता में भगवान 5वें अध्याय में कहते Later हैं also in the 5th chapter in Gita, Bhagavan will say, सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना, तो वहाँ भी पंडित शब्द का there उन्होंने also प्रयोग he has किया used the word समदर्शी। Pandit for a person who has equal समदर्शी जो है vision. वो भगवान की He is Samadarshi. स्थिति को Why? देखता है, Because he sees Bhagavan in everyone. सबके अंदर बैठे हुए हैं। That Bhagavan is seated in ये भी आम everyone. आदमी तो नहीं देख सकता है, आम आदमी तो इसको समझ नहीं सकता। देखता का मतलब वो जानता है इस बात को, Seeing means he understands this. Ordinary person does not जरूरी नहीं है कि think उसको like आँख से ही this. दिखाई It is देता not है। that he will see with his eyes only. तो वो उनको इस तरह से व्यवहार करता है, So he behaves तो like वो सबको this. आदर देता है, So सबको he सम्मान देता है, respects सम्मान नहीं everyone. करता है किसी का। He does not वो सोचता disrespect है कि सबके anybody. अंदर भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में, He thinks that Bhagavan is seated तो उनको within उन्होंने everyone. पंडित कहा है। तो So यहाँ क्योंकि he कर्म says का this person प्रभाव is है, Pandit. तो यहाँ But विशेष here, रूप से because the पंडित context is about karma, so especially he is saying काम और संकल्प से मुक्त होकर कार्य करता है। those one who कार्य ये भी works करता being है, free from kama and ऐसा नहीं है sankalpa. कि काम संकल्प से He is मुक्त also होकर के working. कार्य It is नहीं not कर that सकता। if he is free from kama and sankalpa, he will say इसका that why सीधा shall I मतलब यही work? आता है ना कि अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर मैं क्यों This is the करूँ, question सीधा that if साधा I सा have do मतलब है। not, I don't have any अनारंभ desire, why should I समारंभ, work? It समारंभ का doesn't think मतलब like वो this. जिसको जो भी कार्य Bhagavan did करना not है say anarambha, he said उसको सांगोपांग samarambha, रूप से meaning करता है, whatever he does it properly. सांगोपांग रूप से करता है, यानी कि वो किसी अंग को छोड़ता नहीं है, Meaning he ठीक does से not करता है। leave वो any anga, वास्तव he में does everything जिसकी properly. फलेच्छा So फल को actually, अभिमान नहीं है, one who वही does काम को not ठीक have से कर desire for सकता है, result and sense of क्योंकि उसका doership, मन जो only है he will work वो स्थिर बुद्धि properly है, because स्थिर his मन है। mind will be stable. जिसकी फलेच्छा है उसका मन तो फल की One ओर who जाएगा, has desire for ऐसा नहीं fruit, है कि नहीं he अगर मैं will कर्म run करूँगा after तो फल नहीं मिलेगा। the result उसकी only. कुछ शक्ति जो है वो So उसी में part चली of जाती है, his वो energy पूर्ण शक्ति gets अपने कार्य में नहीं invested लगा सकता, bothering about the result only. इसलिए He will स्वभाव not में be able to put entire energy in the उसका work मन जो है वो अस्थिर है। because his mind is unstable. आपको कोई भी काम ठीक से करना है तो If you have to do मन anything वहीं properly, स्थिर होना चाहिए, your mind should be वहीं पर केंद्रित uh, होना चाहिए। focused on ये that. तभी संभव है जब मन को That is only possible when लगाने के लिए, उसको विदूरित करने के लिए कोई चीज ना हो, और ये कामना जो है और जो संकल्प when और there जो is फलेच्छा nothing है that distracts your mind. ये And this kamana, the आपको desire for result, it विचलित, आपके मन को it विचलित करती है, disturbs your mind. चंचल जो बनाती है, जो आगे भगवान It makes it कहते हैं कि flickering. मन चंचल है, अर्जुन कहता है चंचलम ही मन कृष्ण, तो वो चंचलता किस कारण से होती है, वो हमारी कामनाओं के So कारण why होती does है, mind become और unstable? कुछ नहीं है। It is just due to our desires, जप nothing करके else. देखें, जप करके देखें तो मन में If you चंचलता क्यों sit and आती है, try doing कामनाओं के japa, कारण आती try to fix your mind, you will see that why है, your तो mind इसलिए is जब वो getting काम disturbed उसको due to desires. तो उसका मन जो So है वो since he does not have स्थिर हो any जाता है। desire, his mind is stable. जैसे आपकी दीपक जहाँ पे कुछ वायु नहीं है उसकी लौ किस प्रकार से Like in a स्थिर lamp, रहती है, if there is no वायु wind, नहीं है, उस प्रकार then से उसका the मन स्थिर flame रहता is है, so it's just straight going वो up. काम को ठीक से It करता doesn't है, इसलिए कहा it doesn't समारंभ। flicker. So such a person he works properly.
So for him, Bhagavan said Samarambha. दग्ध कर्माणम, तो उसके जितने भी कर्म हैं वो So ज्ञान all रूपी the अग्नि से karmas दग्ध that he होते हैं। performs, they are burnt by the इसलिए वो fire इस of ज्ञान के knowledge. सहित कार्य करता है कि Meaning he works with मैं शरीर knowledge से भिन्न हूँ, that I am different और from the जो भी body, क्रियाएं हैं वो सारी शरीर में ही हो रही हैं। and all the actions which are being done, they are being done in the body only. जितनी भी क्रियाएं हैं वो शरीर में होती हैं, और मैं शरीर हूँ नहीं, इसलिए तो वो पंडित है, उसमें ये And विवेक he है, understands that he is not the body, तो इसलिए and he is उसके a मन में ये pandit. भाव He आता है, has this sense of discrimination, wisdom that I am not the body. होती है शरीर So में, then he naturally understands that I am not the doer, I am just the witness. और कोई भी क्रिया, कोई भी फल, कोई भी इच्छा, Any activity, result, or desire, it doesn't क्योंकि touch जितने भी me, फल आएंगे because whatever वो आत्मा results के I will भाव ही get, आएंगे, they will be outside शरीर the पर Atma इनका only. प्रभाव होगा, Their शरीर पर तो effect पड़ता will ही be on है। the body only, not on the जो Atma. इस बात को समझता है The one who understands तो उसके this, कर्म जो हैं फिर वो his भस्म हो जाते karmas, हैं, उसी प्रकार they से are जैसे आप दिए burnt को in the same way किसी that भाड़ में भूंज लें, we fry the तो फल seeds पैदा नहीं करते हैं, इसी प्रकार somewhere. उसके कर्म कुछ भी They पैदा will नहीं not करते। fructify into any तो ऐसा other व्यक्ति फिर कर्म crop. क्यों करता है, So then why does such a person perform karma? प्रश्न आता है। तो इसके मधुसूदन सरस्वती तीन कारण बताते हैं। Madhusudan Saraswati ji एक तो tells लोक three संग्रह के reasons. लिए करता है, One जैसे is भगवान ने Loka तीसरे Sangraha, अध्याय में कहा, लोक what संग्रह Bhagavan said in the third chapter of Gita. संरक्षण कर तुम्हारा, कि दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए, नहीं तो To उसका set an example for others. दूसरे लोग भी निकम्मे बन जाएंगे। और दूसरा वो करता है कि उसको भी अपनी जीवन क्रिया तो चलानी ही है, Another is he also has to maintain his body. धारण करने के लिए कुछ Every भोजन person, in order to maintain his body, he needs some food, clothing, shelter. बचाने के लिए कुछ व्यवस्था तो रखनी पड़ती है, तो उसके लिए भी वो कर्म करता है। So for that also he does karma. तीसरा वो कर्म करता And है third, समाज सेवा he हो, does karma for social समाज service. सेवा हो, इसलिए वो कर्म करता है। और चौथा एक और है, And the fourth, there is one more, वो है प्रारब्ध बस, that is out of prarabdha. क्योंकि जिसके काम संकल्प वर्जित हो गए Was हैं, one who is नया devoid कर्म of kama and sankalpa, he is not going to create new karma, कहा गया कि उसके कर्म जो है because as it was said that भुने his हुए बीज karmas की are तरह होते fried हैं, like दग्ध बीज की तरह, तो the नए कर्म seeds. पैदा नहीं करता है। लेकिन जो The प्रारब्ध karmas है are burnt like the fried उसका फल seeds. तो आता है ना, But whatever prarabdha is already there, केवल that will give its सुख दुख result. में नहीं आता है, And परिस्थितियों में prarabdha भी does आता not है, give result only like प्रतिकूलता sukha बनती है, and dukkha. कुछ समस्याएं पैदा हो जाती So हैं, what it does, it creates some situation, and then you have to handle that. You have to do something in that तो ये कुछ situation. कारण है So he does karma out of prarabdha also. So these are some reasons भी कर्म due करता to है, which such a person also और उससे does उसको कोई karma, समस्या पैदा नहीं होती। and he doesn't तो यही कर्म का face any सिद्धांत है, problem जिसको out of it. भगवान फिर So this is the science of karma, and regarding this इस Bhagavan प्रकार will से tell more in the upcoming verses also, निर्लिप्त व्यक्ति है, जो बुद्ध है, पंडित है, बुद्धिमान है, वो किस that प्रकार one who कर्म is करता है, Buddha, इसका प्रवचन Nirlipta दूसरे or अध्याय में Pandit, how he does दूसरे karma. भाग से। So we'll stop here for today, and if you have any question, you can ask. यूट्यूब से प्रश्न है बाबा जी। स्वभाव के अनुसार कर्म करना और Question: working according to Swabhava, स्वभाव के विरुद्ध कठिन परिश्रम करके फिर भगवान को अर्पित करने से बेहतर है। स्वभाव के अनुसार कर्म करना वो आसान है, it is easy to work according to Swabhava. तो आप चाहे स्वभाव के Now, अनुसार if you कर्म are a करें या devotee, स्वभाव के विरुद्ध whether करें, you आपको work सेवा according तो to करनी ही Swabhava or against your Swabhava, you have to anyway do seva to Bhagavan. आएगी। So difficulties will be there. बेहतर की तो कोई बात नहीं है, उसमें यही है कि वो It आपके is nothing about समस्या आएगी। good, better. If there will be difficulties, challenges. बाबा जी, यह दो तरीके के लोग हैं, एक भक्त है, भक्त बनना चाहता है और भक्त में थोड़ा सा There निष्ठा are करनी है। two types of people. One who want to become devotee. दिल में तो भगवान के कामने से ज्यादा भगवान को पसंद करने के लिए करें, तो उसको कोई बांध नहीं आता है, मतलब वो भी सारा
सारे लेता है इस दुनिया से, पर उसको बनता नहीं कुछ भी, क्योंकि भगवान का जाति बन गया, उनका सेवक बन गया। पर जो लगता है हम भक्ति मार्ग में हैं, पर वो स्थिति निष्ठा नहीं बनी, भगवान के भक्ति के प्रति रुचि नहीं बनी। पर हम जनरली ये नहीं करते, जो आपने बताया ऋषि ऋण का हो या देव ऋण का हो, पितृ ऋण का हो, कभी कभी नेग्लेक्ट कर लेते हैं, भक्ति मार्ग में आए हैं सोच के, तो तब हमारा बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि ये सारे बंधन करती है हमको, पर हम सोचते नहीं, हम बांध के रख रहे हैं चीज़, तो बुद्धि अशुद्ध हो जाती, तो हम और भी बंधन में पड़ जाते हैं। ये विचक्षण ना होने की वजह से और भी एक के ऊपर बंधन बढ़ जाती है। तो हमारे लिए भी कुछ ऐसे काम है प्रभु जी, बाबा जी, जो मतलब यज्ञ करने का, कोई छोटा दान करने का, कोई सेवा करने का, ऐसे है बाबा जी? ऐसा है कि भक्ति मार्ग जो है ना वो श्रद्धा पर आधारित So है। bhakti marg is based on Shraddha. It is based on Shraddha. Starts with Shraddha. शब्दों में लिखा है। Shri Rupa Goswami has told in very clear words, Adav Shraddha. Without Shraddha, there is no bhakti. दो प्रकार की होती है, एक सामाजिक, But that Shraddha is of two types, Samajik and Shastriya. अंदर शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, If you do not have Shastriya Shraddha, if you have Samajik Shraddha, then your debts are not paid off. You will have to work for them. But if you have Shastriya Shraddha, आप उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उनको then you can neglect. प्रश्न है बाबा जी कि युक्त कृष्ण कर्मकृत का अनुवाद ये है कि ऐसा व्यक्ति जो हर कार्य में सहभागी होता है। Does Yukta Krishna Karmakrit, doesn't it mean कार्य क्या है और वह व्यक्ति सभी कार्य का मतलब जो भी कार्य वो करता है, सभी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ, doing all activities does not mean that he will do everything, means whatever he does, means everything that he does, वो युक्त है, he is Yukta in that. से बंधन नहीं होगा, ये कहने का मतलब ये एक। और दूसरा अर्थ ये है कि उसको जो कर्म करने चाहिए थे, Another meaning is that whatever karma he should have done, उसके वो ऋण से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कर्मकृत का मतलब वो सब कर्म उसने कर लिए, ये भी अर्थ इसका हो सकता he has already done all the karma. है। बस Aji, I would like to ask about clarifying about Sankalpa, and I was thinking of an example. So when I'm studying, then I notice that when I'm absorbed in trying to understand and the matter, then I'm happy. But when I try to, when I'm thinking, yeah, I need to finish this before class, or I need to kind of with the karma of the result, then I cannot really, then it doesn't really work, this absorption, this happiness. So that, in that example, I understand the karma. So what would be the sankalpa in that? No, sankalpa is just liking or not liking. You like something, then you have sankalpa for that I like it. And from that comes desire, I want to do it. Sankalpa is the root for karma. And that to give up, that means actually then have this, what he spoke before in the Bhagavad Gita, give up this. Yeah, then you just do it because it is your duty to do it. So when karma is there, then the fruit is there. रविंद्र जी का प्रश्न है, क्या हम अपने स्वभाव को जाति के Question, आधार पर भी can we understand our swabhava on the basis of jati? Quiz is one way of understanding swabhava, but other than this also, is there any reliable method by which we can understand our swabhava? The easiest method is this only, that as I said, suppose we give you independence, complete freedom, whatever you like you do. Suppose I say that today you are totally free, you whatever money, anything you want, you will get everything. What will you like to do?
whole day. तो उससे पता चलेगा आपका कि मेरा ये स्वभाव है, That will tell you क्योंकि आप वही this is बनाते your हैं swabhav, because you will like to do that only उसी में which आता gives you ananda, है जो आपका स्वभाव होता है। pleasure, and you get ये pleasure जानना आपको अपने from को पहचानना doing पड़ेगा what is according to your कि swabhava only. हम एक That you have to स्वभाव understand yourself only. I have told earlier many times, we have made स्वभाव a जानना survey उसको on the Vedic psychology website. सहूलियत के लिए You can take that survey. आपको दिशा निर्देश मिल जाएगा। It will give you an indication. दिव्यनिताई जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। महाराज जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो जैसे हम जब भी स्वभाव की बात करते हैं तो महाराज जी, क्या चार ही प्रकार के स्वभाव होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको हम स्वभाव बोलते हैं, या इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज रहती हैं कि अलग भी स्वभाव है? ये मेरा पहला प्रश्न है महाराज जी। तो ये तो मुख्य स्वभाव है, इनके अंदर बहुत वैरायटी है। ब्राह्मण अनेक प्रकार So के these हैं। is are the main swabhavas. There are many varieties. Brahman also has many divisions. Kshatriya, सेवा Vaishya, सेवा Shudra. जब उसका स्वभाव सेवा करना है, Shudra सेवा swabhav is to करने do में कोई seva, कमी हो सकती है ना। but seva can be of सेवा many भी एक ही types. प्रकार की थोड़ी है। Seva is not उसमें just एक of भाव one तो type. ईश्वर भाव है कि ईश्वर भाव करना, ईश्वर भाव भी अनेक प्रकार का हो सकता है। So Kshatriya has Ishwar bhav, but that also can be of many types. वैश्य अनेक प्रकार की होती है। Brahman has many other qualities. So विविधता तो हर चीज में ही है। so variety is there everywhere. तो एक ब्रॉड कैटेगरी जिसको बोलते हैं, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra is like a broad category. That is 4 in number. कि उसका कारण मैंने समझाया था। So I had explained the reason. इसी जो चातुर्वर्ण वाला जो मैंने प्रवचन दिया था उसमें बताया था कि मूल 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। So as I had explained, mainly there are 3 gunas, sattva, rajas, tamas, समझाया था and all कि swabhavas come from there only. So from these 3, only 4 are possible, because the combinations that happen, sattva, क्योंकि सत्व के बाद में जो है ना वो तमस नहीं आ सकता है, तमस के because बाद में sattva, after का विरोध है। sattva and tamas are completely opposite to each other. After sattva you can have rajas only after. So there are only 4 possible combinations. दूसरा प्रश्न क्या है? और बाबा जी, दूसरा प्रश्न है बाबा जी, जैसे ये आज कर्म के बारे में कि कैसे जैसे अंत में जब भगवान बोलते हैं अर्जुन को, जहाँ शुरुआत में बोलते हैं कि So in the end, कर्म Bhagavan मैं says, करता हूँ, tells Arjun खुद को करता नहीं समझना है, और that अंत you में don't भगवान बोलते हैं understand कि yourself as the अर्जुन doer, आप ऐसा and समझो then he says, कि Nimitta Matram, आप निमित्त हो, करता नहीं हो। that you are just the Nimitta, तो you are not the क्या Karta. इसका मतलब अल्टीमेटली हमको इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचना ही है कि मैं वास्तव में निमित्त ही हूँ, और So everything ultimately, is do we just have to reach this understanding जो that I चीजें am a कर रहा Nimitta हूँ वो only, केवल करवाई जा रही है? that whatever I'm doing, it is just being done through me. सच्चाई तो यही है ना। So answer, yes, you have to reach this state, because this is the reality. बाकी This सब is भ्रम है। rest, everything भ्रम is में आप Brahma. सोचते रहिए, In Brahma, you can think whatever you like. असलियत तो यही I है। am this or that. Reality is this only. देख सकते हैं क्या You can see, analyze your body also. लोगों के उदाहरण पढ़े होंगे कि वो You must have read so many stories. Some person suddenly became paralyzed, बोल भी नहीं सकते, such a state that even words don't come out, or sometimes in one whole side becomes paralyzed. Even the tongue cannot move. पता चलता है कि हम क्या हैं। So what does it indicate? That what am I? But still the person is seated within. बैठा हुआ था, व्यक्ति में तो कोई अंतर नहीं, आत्मा में तो कोई अंतर नहीं आया, शरीर में ही अंतर आया है। तो पहले चाहे वो So there is no difference in the person within. The difference is in the body only. He might have been an Olympics winner earlier. It's not something great. Just one nerve can get compressed and the body can become paralyzed. So now where is his doership? It's gone. तो सच्चाई तो यही है। The truth is this only. मानते नहीं है, ये हमारा No, we don't accept it. That is our moha. That is our ignorance. गौर जी का प्रश्न है कि Next question. काम के लिए किया गया कर्म How can I discriminate between acting because of karma versus acting because of pleasure in the acting, which might be a symptom of we are acting in our स्वभाव? तो स्वभाव के लिए तो कर्म वही है ना जो
स्वभाव के अनुसार कर्म The होता है, answer स्वभाव के लिए कर्म नहीं होता है। karma is not for Swabhava. Karma is according to Swabhava. It is not for Swabhava. के लिए काम में आनंद तो आता है जब आप स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। Pleasure comes only when you work according to Swabhava. नहीं है वो तो आनंद है बाई प्रोडक्ट। Such people, they do not work for pleasure. Pleasure is a byproduct of that work. यहाँ देखना पड़ेगा कि आप कर्म योग की बात कर रहे हैं। Here you have to see whether you are कर्म करते हैं। in bhakti, you are working for pleasure of Bhagavan only. हमारी तो अभिलाषा है ही नहीं कुछ, एक ही अभिलाषा है कि भगवान को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है। जो Anya Abhilashita Shunyam. There is only one Abhilasha. We have to please Guru, Bhagavan, Vaishnavas. Their seva is the only goal. That is the only desire. For Karma Yogi, this is the only kamna is that I will work according to my duty as a service to the society. He'll do it as a sense, with a sense of duty. Whether there is pleasure or no, that is not his goal. चलो प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।